This conference will now be recorded. Hi guys, good evening all of you. So we are here, right? Uh, when we left, I think price, right? The variable price and standard price that we were taught in our earlier class. So variable price, what is the difference? They may ask in interview. What is the difference between the variable price and standard price? So in variable price, there is no profit or loss account separately given. Okay. Whereas in standard price, we get profit or loss separate GL account. That is what the funda by selecting the standard price. Well, today we are checking with an example. Like earlier we used a variable price in Material Master. So here how the prices are calculated. Here variable price formula, total stock value divided by total stock. So first PO, second PO, and we also created the third PO. Now what we do is today we'll go with the standard price. Okay. So this is the standard price. For in-house product, for semi-finished or finished product, usually the company they go for standard price. The advantage of standard price, is that a material purchase or sold with other than standard price, system will post the profit and loss, separate profit and loss GL account. Okay. So what we'll do today, we create a material. Like we need to understand how profit and loss will be separately, shown. Let's say, for example, we have to maintain the standard price as 100 in Material Master. But in PO, the vendor is saying that was 100 rupees I can't do because recently the prices are increased. But in that case, what will happen? Like in PO, the vendor is giving us not in 100, but he is providing the material with 110 rupees. Okay. So in this case, what will happen? Is it a profit or loss to us? Yeah, Rajesh, Harib, we maintain the standard price, the material master 100. Okay. Whereas the vendor has given this material, whatever XYZ, whatever material, the vendor has provided with 110. So there is a profit or loss? Loss, sir. Loss. Yeah. How much is the loss? 10 rupees, right? 10 rupees. Because 10 rupees. yeah, so that loss will be shown in separate GL account. Okay. Whereas similarly, let's say we have maintained 10 Hello, rupees as standard price. my voice Okay. is coming. Yeah, yeah, Arif, your voice is coming. Yeah. So here, let's say we maintain 100 rupees in material master, but the vendor has provided us the material with 90 rupees. So in this case, what is happening? Profit 10 rupees. Profit 10 rupees. That is what the funda. So the separate GL account will be shown. Okay, so let's say I'm showing with an example. What we do, we will not maintain this 1575 is we maintain for variable price. Now let's go with the standard price. For that, I'm creating a separate material with MM01 is the transaction code to create the material. Okay, so I can take anything like chemical industry or leather industry, whatever. Okay, so let's say leather industry. This is my raw material. Okay, instead of raw material, I'm taking finished product or semi-finished. Okay, so semi-finished is halb. Okay, and the finish is the foot. Yeah. So let me go with halb semi-finish. Okay. So always remember halb either material type or the foot. These material types are having standard price. Usually, most of the companies they prefer the standard price. Okay. Here I'm taking the plant. This was the New York plant, which is already there in demo version. And storage location 001. Let's say here leather shoes. Okay.
This is each and material group already we configured, right? So I'm taking here material group leather and textiles 016, okay, and here purchasing RAJ Rajesh. Here nothing as such. Plan data storage one. All fields are optional, so you can leave this. And here accounting one, I'm taking valuation class. You need to take this at any cost. So 3000 you cannot keep this as blank. Okay. And now I'm putting this price control as a standard. So in this case, what we need to do is we need to put the price here, right? Price control standard. We need to give the price standard price here. Okay. If you are selecting variable here, then you need to do the variable price or moving price, both are same. You need to do the price here. Okay. But I'm taking a standard price, so that means let's say the leather shoes I'm getting in. I want to sold in 600 rupees. Okay. This is my price. Standard price. I'm selling this. So valuation class for halb, semi-finished product and Ford is same, different. It start with 7 series, okay, not 3000. 3000 is for raw material ROH, okay, material type. So here I need to select either 7900 or 7910, semi-finished product, okay, enter and save. So now what I'm doing 1.76 is my material number. So let's say this is an example. Material X is nothing but this material which we have created just now, okay, 1576 leather shoes, okay, and the standard price we have maintained 600 rupees, okay, and now purchase order I'll create with MA21M transaction code, and I need 10 shoes, okay. So let's create the PO with MA21M transaction code, okay. So we take the vendor 3000, click enter, and purchase order 3000, okay. Purchase group 000, click enter, and here the material number 1576, right? We need to give this material number that are shoes, okay? And how much is the quantity? 10 pieces, right? In my example, I've given the PO of 10 piece, okay? And price instead of 600, let's say I'm taking 700, okay? So there is a loss of 100 rupees, right? So instead of 600 is my price, which I maintain in Material Master, but the vendor is providing me in 700, let's say, or else, 710. So there's a loss of 10 rupees, right? Just the difference. The difference is the loss. How to calculate the difference? You just see in Material Master how much is the price, and in the PO net price how much you're giving. So 710 minus 700. The loss is 10 rupees. Okay, that is what the difference. And the plan 3000. Click enter, and storage location you just give here 0001. Okay. So now I have created the PO purchase order. So always remember this PO is created 247. If you go here, other PO, let's say I'm giving the same 243 PO number, the one which I have created just now. Here, always remember there is no purchase order uh, appearing here. Purchase order history. Here, material data is there and quantity value. Okay, condition text. So PO history tab will be open once you create the GR. So as of now, I have just created the PO, right? You can even see the print preview. You can take the print copy and send the vendor. So how come the vendor know that you have created the PO? So either via Outlook mail to the developers, they are SAP ABAP, they are the technical consultant. So they will do some settings
with the vendor. Let's say the vendor is not having SAP, but the vendor is using Outlook mail, right? So what the ABAPer will do with the coding, Java, C, C++, to learn that as a ABAP, separate module is there that is called SAP ABAP, Advanced Business Application Product, okay, ABAP. So in shortcut, they call as ABAPer, wanted ABAPer. That means it's SAP technical. So we are SAP functional consultant. We are not technical. So if you don't know Java, C++, or .NET also, nothing will happen. Okay, you can still learn SAP because this is functional. MM, SAP MM is functional. SAP WM warehouse management. Okay, SAP MM is material management, and SAP FICO financial controlling. This is also functional consultant. SAP PP production planning. SAP QM quality management. SAP HR human resource, right? And we have SAP WM warehouse management, EWM extended warehouse management. These are all functional consultants. Okay, so for learning this, it doesn't require any decoding or codings and decodings, the programming part, because we are functionally we are learning this without help of any Java, C++. Okay, I have seen practically in my life, like my colleagues, they earlier they work for 5 to 6 years as an ABAPer, SAP ABAPer. They became bored. Why? Because their life, the whole life, they are spending in coding and decoding only. Where they are not learning the other part of SAP because they are technically they are sound. But the thing is that the salary is not hiked, no increment. Why? Because whatever they are doing daily, they are doing the same thing, right? So what is there to learn extra? You understand? So there's nothing to learn extra in SAP, right? Because they are technically sound. That's the reason the salary is not high in a company. Whereas our part, we are functional consultant. So let's say we learned SAP MM, you got a job in Wipro or Dell, Deloitte, Accenture, okay, Capgemini. So what you do is basically what I have seen in my life is you just work as a SAP MM consultant. That's about 3 to 4 years. Okay. Now you become expert in this. Okay. Now what you will do, you can able to learn the other functional module. Let's say after MM, most of them they go for WM because that is somewhat related to SAP MM. Let's say not 100%, but at least 20% to 30%. It is related. It is clashing with material management. Okay, MM. So what they do, they start learning WM. So what they are doing is they are becoming in future multifunctional consultant. You're not only MM, but you are also aware of WM. Then in the market, your stand will be something different, and your salary packages will be different. But whereas in ABAP, nothing is there as such, right? Those people only they're stuck in coding, decoding only. They are spending the whole life there. They're spoiling their future, but it doesn't mean that they are spoiling. But if those people are happy not to learn other things, then they can opt for that only. But what my colleagues have done is they come out from the ABAP field, they learn something, like PP, they will learn production planning, which is a functional consultant, okay, or else they learn material management. So then what will happen? They again start working in this area, and then after 2 to 3 years, they again learn WM, which is another module, which is also a functional consultant. So that in the market, you are called as multifunctional consultant. But there, it is nothing as such multi-technical consultant. Nothing is there. But here, multifunctional consultant is having a lot of demand in the market. Okay, you'll be getting a good salary. So that is the reason that they go for multifunctional, in future. Yeah, so here see you can see the print preview copy. So this is CEB New York. This is nothing but the vendor 3000 which we have given. Okay, and this is the PO number what we have created. Okay, I'm just showing you the this is how the purchase order look like. Okay, so this is today's date, uh, 8 4. Okay, it doesn't mean that this is 8 April. You need to see from here. Okay, and this is contact person. How this is coming because we have given.
In material master, we have given 000, right? Shift. So your person responsible, black. So you need to understand why this is coming. Okay, let's say I'll show you at the time of creating the material, we have given this is the material number, right? 1576. The hot dot information is coming. Okay, I'll show you 0001. So this information is coming via purchasing. But we have given Raj, no? So why Raj means this Rajesh, right? So let me check RHA. Oh, RHA is not at all showing. Huh? Yeah, RHA. Uh, uh, yeah, Raj is there, right? So this should come. So why this is coming? This is okay. Let me check this. Why this is coming? So here, this is how it looks like. The person responsible black 1576 leather shoes, but that should not come. I don't know why this is coming, but this is technically part. So this is again taken care by ABAPer because they are the programmers. So they will go inside and they'll check why this is coming. So here, this is technical part. Okay, so if we are not aware why, instead of Rajesh, your person responsible. Oh, okay, got it. Your person responsible, Mrs. Black. Yeah, now I got it. How this is coming is 3000 vendor responsible person is Black. So this is coming via vendor master. So let me check the vendor which we have given in the PO. So go to either edit vendor or display vendor. Okay. So here I'm going with XK03. Okay. I will give 3000 is my vendor, right? So this I've given your vendor company code, and this also I need to give 3000. Okay. And purchasing data. By this purchasing data, this information is given in the purchase order print screen. Okay. See here. Your person responsible is a salesperson. This is Black, right? That's the reason in the PO purchase order print preview, it is showing as Black. Okay, which is Black vendor. So yeah. Now see contact person chef. Why this is coming? Let's see. Display vendor is something like purchase group is maintained here. It's not like that, but technically why now we don't know, right? We don't know why this is coming. Actually, this should come via material master, right? But in material master, we have taken Prakash. So that means Rajesh, sorry. So that means Rajesh name should appear in the print view. Now, what we need to do, because this is something called as, like this issue is taken care by the ABAPer. Now, you need to talk with the ABAPer. You need to make him understand first, because, in material master, I have maintained purchase group as RAJ, but here in the PO it is showing as shift. In the PO it is showing as 000. See here, where is our display material? Yeah. So we need to make him understand how we need to speak with the ABAPer. I'll tell you. Okay. So we need to tell them like this purchase group RAJ we have maintained. Okay, material master. So Rajesh should come in the print view, right? Whereas instead of Rajesh, it is speaking chef 000, which we have never maintained in purchasing group, right? In material master. So now, technically, the ABAPer will tell us, okay, boss, you just give the table name. So how to fetch the table name? Because technically, they will ask some points to you, which the functional consultant should provide them. Otherwise they won't understand. Okay, so what we need to do, basically put a cursor here. Okay, and click this question mark button, and technical, go this technical information, which is hammer icon.
click this, and you just see the table name is MARC mark. Okay, and field name, they may add the field name also. Field name is EKGRP, and the data element is EKGRP. So just we need to give the table name to the ABAPer. Now that ABAPer will check technically why this is appearing wrong. Okay, so this is not our headache. Okay, this is what the ABAPer will do. Okay, yeah, that's it. We need to just provide them the table name so that they will fetch the data. Why, like instead of Raj in the your screen, why chef is coming. Okay, so this is what the ABAPer will check. Okay, technically, that is what the difference. Okay, so anyhow, so the PO will look like this. Please deliver to New York. Okay, this is the address. Okay, deliver date is so and so. New York, terms of delivery, FOB, free on board. Okay, this is also coming via vendor master. Okay, FOB is nothing but free on board. That means the vendor will deliver the goods wherever FOB is there. Let's say, for example, in Hyderabad, let's say we are saying Mehdipatnam bus depot. Okay, so the vendor will deliver the goods. Okay, in Mehdipatnam bus depot only. From there, you need to pick your goods, your products. Okay, that is nothing but FOB, free on board, which is again maintained in vendor master. Let me show you here. See, this is FOB, Incoterms, International Chamber of Commerce. Okay, so here FOB is maintained and the New York address is there. Okay, so the vendor, he will deliver the goods till New York only. So from New York, you need to pick up the goods like this it is. Okay, so here we need to understand what data from where it is coming. Now see here terms of payment, 14 days, how this is coming. Okay, so how this is also coming with vendor master. Okay, so here see, if you see the terms of payment here, ZP01, if you open this, then 14 days ZP01. So let me go here, ZP01, see, 14 days, 3% discount, and again see this much percent discount. So this all information is mentioning here in the PO print screen. Okay, like this. And now see item 10 is nothing but line item 10. This is the material number. The description of material number is leather shoes, and 10 shoes we need, and into the price is 710. So 710 into 10, that is 7,100, right? This is how the PO print screen look like. Okay, so now the ABAPer, what they do, they will link this PO print screen directly. Once PO is created, this information will redirect to the vendor Outlook mail. Microsoft Outlook is there, right? Or if they are maintaining Gmail, whatever it is, then the vendor will know, okay, boss, this company needs shoes, on so and so date, delivery date. Okay, like that. So there are different ways where the vendor know that the so and so company has created a PO or they have ordered something. Okay, like via fax, you can just take a printout and send through fax. Okay, so that the vendor will know that, okay, this guy needs this material. Okay, this product. Okay, this is one communication mode. Second is via mail. Okay, and third is you can just call and tell that, we have created the PO, and we are sending already, we have sent the this PO copy in your Gmail or Outlook mail, whatever it is, right? So these are the different communication mode. Okay, yeah, go back. Now what we are seeing is, after passing the PO, here no purchase order history is there. Once you create the GR MyGo, then the PO history will get generated. Okay, so now what we'll do, based on this PO, we need to pass the GR. Okay, so go to MyGo. Okay, use the PO number 243, click enter, and now this quantity 10 shoes, leather shoes, right? With the same price you are taking, 710. Select item, okay, and check and post, or else directly save it. Both are possible. Check means if everything is okay, then the system will give the message document is okay. Now you post it, or else you save this. So now we pass the GR, goods receipt.
leather shoes and quantity. This is coming via purchase order. So now I passed the GR. Okay, goods received. It's a confirmation that I received the goods. So how to check this in SAP via MMBE transaction code. MMBE is the transaction code where you need to check the stock, how much stock is available. So give the material number and the plant and storage location and now execute this. Okay. Now here in unrestricted use it is 10. Unrestricted means it is good to use, no damage. So every company is having quality department, quality testing, people. What what is the work of quality department? Once the goods is delivered by the vendor, they will before keeping this stock in warehouse, okay, or storage location, they will check whether these goods are in a perfect condition or damaged goods. Okay, after quality inspection only, uh, they are passing the GR. They're passing the GR in SAP. Okay, let's say 10 shoes are there. Out of 10, two are damaged. So you will not enter the GR with quantity 10, but you will only enter the GR with quantity 8 only. That means two quantities damaged. Okay. Now what will happen? You just tell the vendor, boss, I have delivered 10 quantity, but you have provided me, two damaged quantities. So that's why I'm passing the GR for 8 quantity only. Now it is your job to send us the damage, replace the damaged goods, okay, or else we won't provide you the full amount, okay. We only charge for aid for goods which is delivered in a good condition. That they keep in unrestricted. There is no restriction at all. You can use this, okay. This is warehouse. There's nothing but go down, okay, go down, and this is the plant, okay. Now, how this data is coming? By passing the GR, goods receipt, right? MyGo we have done already. Now we see the loss. As I told you, separate GL account, general ledger account is appearing. Okay. So here see, because whenever vendor will not give in standard price hundreds, he may give in 110 because the price is increased. Okay. So we pass the GR just now with MyGo transaction and for the whole 10 piece. Okay. Now the system is calculating like this. GR quantity into standard price 10 into 100, but in our case 10 into 710, 7,100. Pay to vendor is GR quantity into PO price. So GR which we passed MyGo is 10 into 710. So we are paying instead of 1,000, let's say instead of 7,000 we are paying 7,100. That means there is a loss of 100 rupees, right? Difference amount 100 is lost to us. Therefore, it will get posted to P&L account loss with transaction fee PRD in accounting document. It is not possible for moving average price. But this advantage is not possible in V, moving average price. Okay. Total stock and total value update automatically after entering GR in MyGo. Okay. So now let me show you how it will show the separate GL account. That is what we are seeing in the example. How you will see, Rajesh, any idea? We have created the GR, right? So now what we will do, how to check the GR, what is the transaction code, the same transaction code, right? MyGo, go to MyGo and just you need to select this the A04, right? Display. You click this A04 and automatically this GR number, the existing whatever the last GR which we have created, that will come directly by default. Okay, click enter. Now we are checking accounting document, right? Click doc info button and click FI document. FI is finance document. Okay, and now you click accounting document.
double click this accounting document. So here see, working process inventory GL account is debited, okay. GRIL clearing account is credited, okay, and expenses from price difference. This is the loss. So this is the loss. Okay. So actually, it should be 6,000, but it is 7,100. So difference, the loss is 1,100. How this is coming like you? Why this 6,000 is coming? It should not come into picture, right? Because 7,000 should come here. Why 6,000 is coming? Mhm. So 7,000 minus 7,100 should be 100 rupees, which is the loss. So why this is coming? Something different is there, right? Let me check once again. So go to first PO part, ME23 display PO, right? ME23N. ME21N is to create the PO, ME22N is to edit the PO, ME23N is to display the PO. Okay. So now see here, this is 7,100. 10 into 710 is 7,100. This is the price, right? Whereas in Material Master, if you double click from here, directly redirect you to display Material Master, which is MM03. See here how you should know. You just go here and check here. You see this is transaction code MM03. So here I need to check once again, cross check in accounting one view. Oh, okay. So here see standard price we have given 600, right? This is what? Yeah, it's correct. It's correct only, right? It's not wrong. It is correct only. So actually, the price should be 600 into 10. That should be 6,000, right? So here it is total value. But whereas the vendor has provided us with 710, that is what the difference. So here, this is the loss to us. Where it is. Let me again go back to display GR accounting document. We need to check. Yeah, this is ours is correct. So actually it should be 6,000, but it is not possible. The vendor has provided we receive the GR with 7,100. So there is a loss, right? Expenses from price difference. This is the loss. Okay, this is loss. This is showing in separate GL account, general ledger account. Okay, like this. So this is the GL account, 231,500. So separate GL account, the expenses of price difference, which is a loss, is displaying here. Okay. Whereas now we'll check in another way with an example by setting a profit example. So what I will do first, I'll try to create a separate material for this and not creating the PO on the same material, but I'm directly creating the new material with MM01. So let's say leather industry HAL, okay, instead of HAL, I'll take FERT, which is nothing but finished product, right? So for the material type FERT or HAL, most of the company they take standard price, not a variable price, okay? So in interview they may ask what is the difference between standard price and variable price, what will happen in the background. So already yesterday class also I've shared you the notes, I shared the audio recording. You just go through this and practice yourself, then you'll understand, okay, this is what the difference, right? So here 3000 and here I'm taking 2001, and now again instead of leather shoes, let's say my finished product is something different, let's say Asian paint. This is my finished product kilogram.
004 is chemical, right? Here purchasing and maintaining here we are at Prakash. Plant nothing as such. Accounting one valuation class obviously start with 7 series, okay, 7920 finished product. And now standard price, what I'm doing is I'm maintaining here 100 rupees, okay, let's say 100 rupees kg Asian paints. Now this 1577 separate material number is generated. This is external material number which is provided by the system SAP, right? This is external. So 1577. I'm going to create the PO with material 1577 with ME21 transition code. So again, I'm giving vendor 3000 here. Okay. Enter. Purchase order 3000. Purchase group. Yeah, Prakash. Jyoti Prakash, right? Jyoti Prakash today is absent. Huh? I'm not seeing him since 2 3 days. Okay, so what is that? 1577. Click enter. Asian paints. I'm taking 10. Now see the difference. In Material Master, we have maintained 100 rupees, right? But whereas the vendor is providing us Asian paints per kilogram with 90 rupees. So what is happening here? Is it a profit or loss? Arif, tell me, Arif, Profit, sir. how much is the profit? 9,000 rupees. No, no, not 900. No, sorry, Here, 900 rupees. Okay. mm, no, not 900. 100 rupees. Okay. See, in Material Master, we have maintained 100 rupees, right? Right. We have maintained the price, standard price is 100, right? Whereas here we Right. are maintaining in the PO, the vendor is providing us with 90, right? First, you see the difference. Material master 100 and net price here in the PO 90. it is 90. So how much is the difference? 100 minus 90 is 10, right? 100. So Yeah, yeah. 10. 100 minus 90 is 10, right? So 10 Yes. into quantity, 10 into 10, 100. So 100 is Okay. loss. Don't get confused. Yes. Understand? Okay, sir. Okay, sir. Yeah, Rajesh, did you understand? Yes, sir. Is there any confusion? No, 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 sir. Do you understand what I mean to say? See, in Material Master in Asian Paints, let me go again. Double click this 1.77. Here I maintain the accounting one view. Here I maintain 100 rupees, right? Net price. Standard price as 100 rupees. Whereas in the PO I maintain 90 rupees. 100 minus 90 is how much? 10 rupees. Again, you need to multiply 10 into 10, 100. So 100 is the loss. Understand? 100 is the loss to us. Sorry, 100 is the profit to us, not loss. Why? Because we maintain a material master 100, but the vendor is providing us in 90 rupees, right? Asian Paints. So it is a profit of 100 rupees, right? There's a profit of 100 rupees. Okay. In our earlier example, previous example, we have seen the loss. What loss? Like in material master, we have maintained material master. We have 1 second. I'm getting a call. 1 second. Hello. Hello. Yes, sir. No, no, I'm getting a call. 1 second. Okay. Yeah. So in our earlier example, we maintain material master as 6,000, okay? And we have created the PO with 7,100. So how much is the loss? 7,100 minus 6,000 is 1,100 loss, right? So 1,100, right, is the loss. Whereas here, 1,100. yeah, whereas here, it is a profit, right? It is a profit.
It is a profit to us, right? 1100. Then Yes, sir. 1100 into again 10. We need to multiply this. So here in this example, we are seeing the profit part. In our existing PO, we have seen the loss part, right? How the separate general ledger account is coming into picture. Now we are seeing the profit, right? Let me say this first, and then no purchase order history is there. As I told you, when the purchase order history comes into picture, once we pass the GR, goods received. So this is the PO number 450017244. If I check the existing PO, which where we pass the GR, that is for 243, PO history is generated. Let me show you. In item, if we check the item view, purchase order history. Yeah, Arif, you understand? When the purchase order history tab will be appearing once we pass the GR, goods received. Then only for this PO 4500017243, once we pass the GR MyGo, then the PO history tab will be appearing in item data of PO. This is item. This is header. Header means sir का रहता ऊपर रहता, right? The header items, header tab are delivery invoice, condition, text, address, communication, partner. These are all header data of PO. If I collapse this, then all is hidden, right? If I expand this, then what will happen? All the header data tab will be appearing here. This is PO header tab and this is PO item tab, item details. So here purchase order history will get generated. Whereas why not for this PO which we have created just now? Yeah, Arif, tell me. Just what I told you, right? Whereas this the fresh PO we have created, so why PO history is not generating? Tell me, Arif. So you're not finding in item data tab the PO history. Why? Tell me, Arif. Rajesh, you don't tell, but let's see the knowledge of Arif. Yeah, Arif, tell me. Yes, sir. Why purchase order history is not coming into picture here? Huh? Because the vendor is giving 90 rupees. That's what I No, no, think. no, 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 no. Yeah, it is wrong. Yeah, Rajesh, tell me why PO purchase order history, why it is not coming here? Rajesh, tell me. Rajesh, are you there? राजेश, अरे यार सिंपल है भाई. अभी तो बोला ना भाई. मैं ये बोला अगर सिर्फ पीओ आप बनाए, सिर्फ अभी पीओ ही बनाया, मैं अभी जीआर बनाया क्या इसके ऊपर? माइको करा क्या मैं? नहीं करा मैं. जब आप माइको करेंगे पीओ के बाद, जब पीओ हिस्ट्री आता, अब यहाँ कहीं को आ रहा पहले के पीओ में, क्योंकि पहले के पीओ में मीको करा भाई. मई माइको करा. देखो आप अब यहाँ पे, अब ये 3 निकाल के 4 निकाल के 3 डालो. ये पीओ के ऊपर मैं गुड्स से जीआर बनाया ना मैं. बनाया नहीं बना, माइको गया ना. माइको में जी जाकर 450017243 वहाँ पे पीओ नंबर दिया मैं, देकर उसको सेव करा, तो जब जाके उन्हें जीआर बना, जीआर नंबर भी उन्हें दिया आपने को, जब जाके परचेज ऑर्डर हिस्ट्री आता बोला मैं आपको. मैं ये बोलना चाह रहा हूँ बहुत राजेश और अजीत को कि पीओ जब आप जी बनाते हैं फ्रेश पीओ में जीआर नहीं बना अभी, तो पीओ हिस्ट्री अच्छा टैब ओपन ही नहीं होता आइटम में. हमारी बात समझ में, वो ओके प्रॉफिट लॉस वो तो अलग कहानी है. वो तो प्रॉफिट एंड ओके लॉस ओके आता भी सर नहीं, क्योंकि जब तक कि आप गुड्स रिसीव नहीं बनाए सिस्टम में, तो लॉस और जी प्रॉफिट कैसा बोलेंगे अपने को? आप रिसीव ही नहीं करे ना हम्म गुड्स. जी आप गुड्स रिसीव भी नहीं करे तो लॉस एंड प्रॉफिट की कहानी तो वो तो दूर की बात है वो. पहले ये समझो पीओ आप बनाए भाई, परचेज ऑर्डर बनाएंगे, जी कंपनी को बोल रहे जीआर की कंपनी को भाई मेरे को 10 किलो एशियन एशियन पेंट या मैंने 10 लेदर शूज बना होंगे, ठीक है. तो उन्हें क्या करा जी आपको, ठीक है बोल के शूज आपको दे दिया. अब आप क्या करें, क्वालिटी हम्म इंस्पेक्शन पूरा करके उसमें डैमेज कितने हैं क्या है वो पूरा देख के आप जीआर पास करता. यूजुअली ऐसा होता रियल टाइम में. अच्छा एसएपी जो यूज करते जी जी कंपनी वाले के, तो वो लोग क्या करते माने,
हर हर वेयर हाउस डिपार्टमेंट में क्वालिटी इंस्पेक्शन होता है ना, कितने डैमेज है क्या है हम्म। सही लेके आए। अब उन्हें ये 10 जूते में 5 जूते डैमेज है तो क्या आप नहीं भाई बराबर है बोल के क्या जीआर पास कर देते क्या सिस्टम में आपके? नहीं करते ना। नहीं नहीं करते। 5 जी करते हैं राइट। 5 जी। करके आप उसको बोल देते 5 करके बोल दो उन्हें। जब इनवॉइस बनती बिलिंग 5 के बनाते आप 10 का नहीं बनाते। उन्हें आपको हाँ। पूछता क्या भाई मैं 10 आपको दिया तो जब आप बोलते भाई 10 में से 5 डैमेज है, आप मेरे को फिर से यस। रिप्लेसमेंट करो फिर से मैं इनवॉइस बिलिंग आपको बना दूँ फिलवा का तो 5 का मैं जरूर पैसे बोलते हैं राइट। वैसा जी है। जी। So what I mean to say is once you create the fresh PO without passing the हम्म। GR, then the PO history will not generate it, boss. Rajesh, are you there? Yes, yes, sir. Yes, sir. Yes, yes, yes. अरे इतना इतना लंबा टाइम क्यों लगा भाई आप बोलने में? आप भी तो मालूम होना चाहिए ना। नहीं ये नहीं, परचेज एक्चुअली वो ऑर्डर म्यूट हिस्ट्री हो का गया था आता सर, मैं बोलो जब बोल रहा पीओ था। बना के जीआर बनाएंगे। नहीं नहीं, एक्चुअली सर मैं बोल नहीं रहा था वो झूठ मेरे म्यूट से हो गया बोलते था, आप मैं लोग। ध्यान में नहीं था सर। ओके ओके तो अभी क्लियर है या फिर अभी भी डाउट है? दोनों को करूँ मैं नो नो अरीब सर, और क्लियर राजेश। क्लियर सर। यहाँ पे पीओ क्लियर हिस्ट्री क्लियर क्यों सर। आया क्योंकि हम, हाँ यहाँ पे पीओ हिस्ट्री, हाँ हाँ यहाँ फिर से बोलो हमें। पीओ हिस्ट्री यहाँ पे इसलिए आया क्योंकि पीओ बना के हम इसका जीआर भी पास करें पूरे सिस्टम में। अगर सिस्टम जीआर बोलो तो पास एसएपी नहीं के करे तो सिस्टम में सर बोलो। पीओ नहीं बताता क्या तो जब हिस्ट्री में? पीओ हिस्ट्री आता, अब सिर्फ यार अभी यार हाँ जीआर पास नहीं करे तो पीओ हिस्ट्री भी जनरेट नहीं होती। देखो आप, अच्छा। ये अभी बना ना जब पीओ में। ओके ओके। जी सर। ठीक है। देखो यहाँ पीओ हिस्ट्री है ही नहीं टैब यहाँ पर आइटम लेवल पर राइट। नाउ यू अंडरस्टैंड हाँ। अरे जी सर। सर, अंडरस्टूड राइट अरे? यस This सर is a यस सर। fresh PO just now we have created. Okay. बट वी हैव And नॉट we जनरेटेड पास्ट जीआर। have till now. Let's हम्म। assume that you not pass any GR, right? So you need Asian Paint 10 kg, okay, with 90 ओके rupees. Now you have just sent the fresh PO to the vendor. Yeah, but we are still awaiting. Let's assume, yeah, no, let's assume that you are just awaiting for the vendor to get the stock. Let's say you got the stock. Okay. The vendor has sent you 10 kg Asian paint, okay, based upon the PO purchase order which you have sent to the vendor. Now what he will do, he has sent you via truck or lorry, whatever transportation mode, via cargo, whatever it is, okay, via shipment, okay. Now once you receive the goods, then only you pass the GR in the system. Let's say you receive the goods 10 kg एशियन पेंट आपको आ गया, वेंडर डिलीवरी कर दिया आपके कंपनी में। अब क्या करना आप? सिस्टम में एसएपी को क्या मालूम होना, कैसा मालूम होता है एसएपी में सिस्टम आ गया स्टॉक आ गया नया है। तो उसके लिए आप जीआर पास करना गुड्स रिसीव, उसका ट्रांजेक्शन कोड क्या है? एमआईपीओ माइको। माई गो। माइक। समझे यार? गुड्स मूवमेंट या खुद खुद ही बता रहा स्टार्ट ऑफ एप्लीकेशन। हाँ तो माइक्रो जी। में जाकर आप क्या करना, ये तो डिस्प्ले ऑलरेडी जो बना है उसको हम देख रहे हैं। ये फ्रेश है ना, जैसा फ्रेश पीओ बनाते हैं। तो यहाँ A01 हम्म। सिलेक्ट करना, गूड्स रिसीव। ओके, देखो गूड्स रिसीव परचेज ऑर्डर। अब आपको समझ में आ रहा है, मैं खुद बोल रहा। तो यहाँ क्या करना है, यहाँ पे पीओ या R01 या A01 रहता है या R01, यहाँ नाउ यू नीड टू गिव द पीओ नंबर हियर। व्हाट इज द पीओ नंबर? द फ्रेश पीओ 44 ना, 244 यस। 2। फोर फोर। Yeah. So now यस। see here, the quantity is 10. Let's say it is a 100% no damage, nothing. If you find something damaged, then what you will do? You remove this and you put here 6 kg. यस। The balance 4 kg, the balance 4 kg is defect, having some defect. डैमेज। Okay. After quality inspection, you came to know that out of 10 kg, 4 kg is damage. यस सर। Like this. Let's assume if everything is perfect, then you will not change anything in quantity tab. See here, this is weight tab यस। of the GR, this is quantity, this is material number, Asian Paint 1577, डबल क्लिक करो तो उन्हें फिर देखो ये खासियत है एसएपी की। यहाँ से क्लिक जी। करे तो वहाँ मटेरियल मास्टर चले जाता, मटेरियल मास्टर में क्लिक करे तो कहाँ की चले जाता। तो ये क्या है, ये फीचर्स एसएपी दिया। ये क्या है? MM03 है, डिस्प्ले मटेरियल। एम MM03 जीरो तो थ्री मैं जीआर जीआर से भी जा सकता हूँ मैं डबल क्लिक करके। समझे आप? So this is the जी। GR screen. So here let's assume the quantity is whole 10 is perfect condition. Now you click item OK and save it. Now the ओके। GR is passed.
Now, if you check the Yes. PO, if you check the PO 4500172444, then PO history will get generated in item tab, not in header tab. I think you understand what is header level, what is item level, right? Header level of PO and item level of PO, you should be aware of this all terminologies as a functional consultant or as a technical consultant. टेक्निकल कंसल्टेंट दे डोंट नो, उनको पता ही नहीं है भाई पीओ बनाते ये लोग, वो माइको पास करते हैं, मटेरियल बनाते हैं, उनको आता ही नहीं, कुछ भी नहीं, वो लोग टेक्निकली साउंड रहते हैं, कुछ भी इशू आ गया जैसे अभी हम देखे पीओ बनाए, पीओ में परचेस ग्रुप जो है राजेश आने का, वो शेफ का आदमी का नाम आ गया, तो वो एरर है, तो वो लोग क्या करते हैं मालूम, उनको पता ही नहीं रहता हमें मटेरियल मास्टर मटेरियल मैनेजमेंट में एमएम वाले क्या काम करते हैं, क्या उनको मतलब ही नहीं है, उनको ट्रांजेक्शन कोड भी नहीं मालूम, MM01 अच्छा मटेरियल बनता है क्या, उनको पता ही नहीं है। तो उनको हम ये बोलना है कि भाई देखो भाई पीओ प्रिंट स्क्रीन में हम जो है मटेरियल मास्टर राजेश बोल के हम उसमें मेंटेन करें, लेकिन शेफ का नाम आ रहा है, क्यों आ रहा, तो अब उन्हें देख के पूरा क्या करते हैं मालूम, कोडिंग डिकोडिंग कहाँ पे जो है प्रोग्रामिंग में कुछ मिस हुआ, ऊपर चेंजेस करके फिर उन्हें वो सही प्रकाश लाके बताता अपने को पीओ स्क्रीन में, वो टेक्निकली उन्हें साउंड रहता, अपन फंक्शनली अपन साउंड है। फंक्शनल कंसल्टेंट को बहुत सारे ट्रांजेक्शन कोड्स याद रहता है, वो लोगों को टेक्निकल वालों को कुछ भी नहीं रहता, वो लोग जस्ट स्क्रीन खोलना बताना भाई ये एरर है भाई सॉल्व करो, बोलिए समझे ना। ओके, सो नाउ सी आई हैव पास द जीआर, ये मटेरियल डॉक्यूमेंट नंबर, हर चीज को क्या है एसएपी में क्या होता है नंबर जनरेट होता है, मटेरियल बनाते मटेरियल नंबर आता, पीओ बनाते 10 डिजिट पीओ नंबर आता, राइट, जीआर बनाते जीआर नंबर आता, ऐसा रहता। नाउ अब क्या होता है बोलो, अब separate GL account is triggered, right? So now what I will do, I will check first whether we need to get the profit, right? So go to A04 display, the same GR number is there, click enter, click doc info button, click FI document, click accounting document, okay? See here, income from price, how much income 100, ये 100 कैसा ना आ रहा वो समझना है अपने को, समझे आरिफ, ये कैसा आया, क्योंकि वो एंड यूजर्स क्या रहता है बोले तो, अब आपको बोलो एसएपी में दो जॉब है भाई मार्केट में, एसएपी एंड यूजर है, एसएपी एंड यूजर वो तो जनपैट में आप जैसा बीकॉम करते हैं ना, एसएपी बीपीओ का जॉब मिलता है, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग बोलते हैं, जी और सर। आप बोलते हैं भाई मेरे को एसएपी आता भाई बोले तो, ऐसे आप कंसल्टेंट नहीं है, आप फंक्शनल कंसल्टेंट नहीं है, आप ये बताना चाह रहे कि भाई मेरे को मटेरियल कैसा बनाना है एसएपी में मेरे को आता है MM01, पीओ कैसा बनता एसएपी में ME21N मेरे को मालूम है ट्रांजेक्शन कोड, जीआर कैसा बनता MIGO, इनवॉइस कैसा बनता MIRO माइरो, ये सब मेरे को मालूम है, तो उन्हें जॉब दे देता आपको, अरे बंदा एंड यूजर है बोलते, ओके। एंड यूजर का काम क्या है बोले तो, फर्ज करो आपको हार्ली डेविडसन कंपनी में आपको जॉब मिली, हार्ली डेविडसन कंपनी जी। में एसएपी है, आप हार्ली डेविडसन के एम्प्लॉय है, तो हार्ली डेविडसन के एम्प्लॉय होने के नाते एसएपी कंसल्टेंट्स क्या करते हैं आपको ट्रेनिंग देते हैं, क्योंकि आप एमएस ऑफिस में काम करें अभी तक, एसएपी आपको नई चीज अच्छा। है, ट्रांजेक्शन जी। कोड क्या है आपको नहीं मालूम, तो फंक्शनल कंसल्टेंट जैसा एमएम है, ओके, हम क्या करते हैं उनको ट्रेनिंग क्या देते हैं, परचेसिंग डिपार्टमेंट के लोगों को हम ट्रेनिंग देते हैं, एमएम आप समझो बात को, एसएपी एसडीबी है, सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन, हर कंपनी में सेल्स डिपार्टमेंट रहता, राइट, राइट, जी। गलत सही है गलत है, हर कंपनी में सही है। मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में सेल्स हाँ, डिपार्टमेंट सेल्स रहता, डिपार्टमेंट रहता। और अकाउंटिंग डिपार्टमेंट रहता, अकाउंटिंग डिपार्टमेंट वालों का काम क्या रहता, वो लोग ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट मेंटेन करते हैं, ईयरली जो है गवर्नमेंट को बताना पड़ता है कितना टैक्स देना क्या है, तो हर कंपनी में अलग अलग डिपार्टमेंट्स रहता, राइट, तो ऐसे भी जी। फीको बोल हाँ। के फाइनेंस एंड कंट्रोलिंग जो अकाउंटिंग जी डिपार्टमेंट से हाँ। आता रहती है, और परचेसिंग डिपार्टमेंट हमारा एरिया है मटेरियल मास्टर मैनेजमेंट, मटेरियल मैनेजमेंट एसएपी एमएम अच्छा। हम जो सीख रहे हैं मॉड्यूल, तो इसमें दो टाइप के जॉब है, एंड यूजर का जॉब बोले तो जस्ट कंप्यूटर ऑपरेटर जैसा रेडीमेड बिरयानी एमएस ऑफिस आपको मिल गया, वर्ड एमएस वर्ड में आप काम करें तो कोई बड़े प्रोग्रामर नहीं बन गया, राइट, वो रेडीमेड अच्छा। है जी। सॉफ्टवेयर, एक्सेल एमएस एक्सेल रेडीमेड माइक्रोसॉफ्ट बिल गेट्स की सॉफ्टवेयर है, वो आप यूज कर रहे हैं, आप थोड़ा बहुत सीख लेते हैं, डिप्लोमा कोर्स तो उसके लिए भी करना पड़ता है, क्योंकि पिवट टेबल क्या है एक्सेल में, राइट, एक्सेल में कैसा जो है फॉर्मूला कैलकुलेशन करना, वो पूरा पूरा पीजी डिप्लोमा या डिप्लोमा 2-3 महीने का कोई भी कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में कर लिया तो उन्हें आपको सिखाता पूरा परफेक्ट, राइट, राइट। उसके ऊपर काम करे तो उसको क्या बोलते हैं एंड यूजर बोलते हैं। उसी तरीके से एसएपी जो है जो इम्प्लीमेंटेशन करते हैं ना हम करते हैं, जैसे कि अभी जो है हम लोग देखे कि प्रकाश जो लेके आ रहे हैं पीआर है वो हम इम्प्लीमेंट करें अंदर,
कॉन्फ़िगर करें हम। एसएपी कोई रेडीमेड सॉफ्टवेयर नहीं है, जैसा मार्केट में मिल जाता है, एमएस ऑफिस मिल गया, रेडीमेड बिरयानी आप ले लिए उसको यूज करते रहे। एसएपी क्या है, रेडीमेड सॉफ्टवेयर ही नहीं है। हार्ले डेविडसन कंपनी अगर ओके। एसएपी खरीदा तो हार्ले डेविडसन के बिजनेस के हिसाब से हमको इम्प्लीमेंट करना। अच्छा। अब मटेरियल मैनेजमेंट हमारा है, राइट। एक प्रोजेक्ट जी। इम्प्लीमेंटेशन में 8 से 9 महीने 1 साल जाता, जब जाके एसएपी का पूरा इम्प्लीमेंटेशन होता उनके बिजनेस के हिसाब से। हाँ, समझ में अपना अच्छा। काम क्या है, जैसे आप परेशान हो रहे थे ना, चल रहा, अरे भाई ये क्या हो रहा बोलते, तो मैं आपको थोड़ा बोल रहा हूँ, मैं अवेयरनेस दे रहा हूँ मैं कि ये हमारा काम है। तो एंड यूजर बोले तो ओके। हम लोग इम्प्लीमेंटेशन कर लिए, करके हम क्या कर रहे हैं, वो लोग को एम्प्लॉइज हु आर वर्किंग इन अ कंपनी दे आर कॉल्ड एंड यूजर, हु आर यूजिंग एसएपी दे आर कॉल्ड एंड यूजर। तो एंड यूजर ओके। बोले भी तो कंप्यूटर ऑपरेटर ही से समझो, क्या कोई बड़ा होने, कोई प्रोग्रामर नहीं होने। एंड यूजर वो तो भाई ओके। कैसा मटेरियल बनाते हैं MM01, क्योंकि नई चीज है अच्छा। उसके लिए भी, बेचारे के लिए, उन्हें एमएस ऑफिस में काम कर रहा है उसको वो मालूम नहीं मटेरियल कैसा बनता है एसएपी में, उसको नहीं मालूम पीओ कैसा बनता है एसएपी में, उसको नहीं मालूम जीआर क्या है। अपन समझाना अपना हेडेक है वो। तो वी आर गिविंग ओके। ट्रेनिंग टू एंड यूजर्स दैट कम्स इन सपोर्ट। हमारा एज ए फंक्शनल कंसल्टेंट हमारा दो काम है इसमें, क्या करते हैं, एक तो प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट करना, दूसरा काम जी। उनको ट्रेनिंग भी देना। सिर्फ इम्प्लीमेंटेशन करके हम छोड़ के चले गए तो नहीं होता, ट्रेनिंग भी उनको देना, दैट अच्छा। कम्स इन सपोर्ट। सो every SAP MM functional or technical consultant, they need to do two type of job. One is implementation as per the business requirement, which is nothing but the programming part, समझो इस तरीके से मोटा मोटा। दूसरा ये है कि वो एंड यूजर्स को ट्रेनिंग देना। एंड यूजर्स बहुत आप समझ गए ना, जो कंपनी में जी। एम्प्लॉयज जो है एसएपी के ऊपर काम करते हैं उनके एंड यूजर बोलते हैं। ओके। Whoever is working on SAP in a company, they are called end users। और हम क्या है, ओके। ओके। कंसल्टेंट है। हमारा काम जो है मटेरियल जी। बनाना नहीं है, हाँ, ये भी आपको बोलूँ मैं, सिखाना है सुनना, आगे और। हमारा सिखाना है, लेकिन हमको मालूम हुए तो हम सिखाएंगे ना। अब जैसा कल से मैं जी आपको हाँ। बोला स्टैंडर्ड प्राइस में डिफरेंस क्या है और वेरिएबल प्राइस में डिफरेंस क्या है। अभी जी। हम आज चेक करें कि वेरिएबल प्राइस में ये प्रॉफिट एंड लॉस जीएल अकाउंट सेपरेट नहीं बताता, राइट। लेकिन जी स्टैंडर्ड हाँ। प्राइस अगर हम लिए मेटेड मास्टर में तो वहाँ पे सेपरेट जीएल अकाउंट आ रहा, लॉस का सेपरेट, यहाँ जैसे तो भैया अपने को प्रॉफिट हो गया, इनकम। अब एंड यूजर को होता दिमाग है क्या बोलूं, एंड यूजर बोलता हाँ, अब यस ये सर। जो है, ये डिपा ये के लिए जरूरी है बोलो, सेपरेट जीएल अकाउंट। फाइनेंस डिपार्टमेंट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट वालों को इम्पोर्टेंट है ये, राइट। उन्हें बोलता अरे भाई इनकम कैसा आ गया भाई, ये सेपरेट जीएल अकाउंट कैसा आ गया, तो उसको समझाने वाले कौन है, हम है, फंक्शनल कंसल्टेंट है। हम हैं। हम जी, बोलते हैं कंसल्टेंसी। भैया देखो ये कैसा आया। हाँ, फंक्शनल कंसल्टेंट ऐसे भी एमएम कंसल्टेंट, तो हम ये बोलते हैं कि भाई देखो ये जो आया 100 रुपए जो प्रॉफिट बता रहा आपको, ये पूरी इसकी कहानी आप बोलेंगे आप, हाँ, भाई सर। मटेरियल का प्राइस आप मटेरियल मास्टर में क्या मेंटेन कर रहे हैं, 100 रुपए, राइट। फिर आप बोलते हैं जी। देखो भाई पीओ ओपन करके रखो, पीओ में क्या है, वहाँ बोलते हुए 90 रुपए, तो वहाँ बोलना भाई आप मटेरियल मास्टर में 100 रुपए बोले, लेकिन वो हौला गधा जो वेंडर है उन्हें आपको 90 रुपए में दिया। हो सकता है भाई प्राइस जो है वो थोड़ा कम हो गया, अभी अभी जैसा गैस का है तो 12 रुपए क्या कि कमर्शियल गैस का 24 रुपए कम हो गया, राइट। तो एक तरीके से प्रॉफिट हो गया, राइट। तो वैसे ही अभी क्या होता है, मार्केट फ्लक्चुएट होते रहता है, तो स्टैंडर्ड प्राइस आप मेंटेन करने के बावजूद भी स्टैंडर्ड प्राइस से और कम में मिल जाते अपने को माल, कभी कभी लॉट में उठा लेते अपन। तो वैसे मौके में अपन प्रॉफिट में है ना अभी। तो अपन जो है जी उनको राइट। ट्रेनिंग देना, ट्रेनिंग में एंड यूजर्स पागल आ रहते हैं, उनको उतना नहीं मालूम रहता। तो फंक्शनल कंसल्टेंट को डीप में नॉलेज रहता है, इसलिए हमारी तनख्वाह जो है और उनकी तनख्वाह में जमीन आसमान का फर्क है। ऐसे भी एंड यूजर जो है ओके। आपको जेनपैक में मिल जाता है, डिग्री कर लेके आप बोल सकते हैं भाई देखो आई नो हाउ टू पे मटेरियल, वो तो एंड यूजर का जॉब है। तो आपको ना 8,000 की नौकरी शुरुआत ही महीने में, वो क्या है, बेकार है, फालतू नौकरी है। प्रोसेस एसोसिएट आपको स्टार्टिंग में रहता है 8,000 9,000 में, आपको विप्रो वाला भी रहता है, विप्रो बीपीओ भी है, विप्रो टेक्नोलॉजी भी है, आईटी इंडस्ट्री भी है, विप्रो जेनपैक में भी बीपीओ है, जेनपैक में भी आईटी है। आपको इंफॉर्मेशन एसएपी ये क्या है, ये आईटी में आता है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, राइट। तो आपको जॉब जो है आईटी में मिलता अगर एसएपी करे तो। अब ऐसे ही आपको जस्ट दे थोड़ा एमएम कैसा, एमएम का थोड़ा वो ओवर भी देख लेंगे, मटेरियल कैसा बना, डीप में आपको क्या हो रहा है क्या मालूम ही नहीं, आपको कहानी से नहीं मालूम, तो आप एंड यूजर कहलाए जाते, तो आपकी तनख्वाह क्या रहती है, 8,000 9,000 महीने को ऐसी रहती। फिर क्या है, 2 साल आप ओके। फंसे तो उसके बाद में प्रोसेस एसोसिएट पीए से जाके पीडी बनते, प्रोसेस डेवलपर, आपकी तनख्वाह फिर 12,000 ओके। रुपये रहती।
फिर आप थोड़ा साल और साल फंसाए तो फिर आप कुछ ऐसे होते होते 30,000 40,000 मैक्सिमम एक 10 12 साल। जैसा मैं इससे पहले मैं आईटी में आने से पहले जेनपैक में काम करा, अंदर को भी मालूम है। तो जी। जेनपैक में 2008 में जब मैं ज्वाइन करा तो मैं एंड यूजर था, मेरे को मालूम है कैसा मटेरियल बनता, कैसा पीओ बनाना। लेकिन वो मैं कोई बड़ा फंक्शनल कंसल्टेंट नहीं था मैं वो टाइम पे। वहां से मेरे को शौक आया अच्छा। सीखना बोल। तो मेरी तनख्वाह हम्म। भी जो है वो टाइम पे मेरी तनख्वाह 8,000 रुपये थी ओके। 2008 में एमबीए करने के बावजूद। वो भी नाइट ड्यूटी थी। मैं बोला नको भाई बोल के 1 साल काम करके मेरे को राबित हो गया। उसके बाद में मैं जो है इंटरेस्ट बताया 2012 में एसएपी सीखा पूरा मैं। अच्छा, तो ऐसा रहता तो आपको बोलने का मतलब ऑलरेडी ये पहले से अब मालूम था ये? नहीं, पहले से बोलते एंड यूजर का मालूम था मटेरियल कैसा बनाते, पीओ कैसा बनाते, जीआर कैसा बनाते वो। लेकिन अच्छा, अंदर का क्या हो रहा है आप मेरे को कोई वो पूरा टाइम पे डिटेल पूछते हैं वगैरह। भाई। ओके। पूरा डिटेल अगर कोई पूछते हैं तो अरे भाई इनकम कैसा गया भाई, ये वो तो क्या आगे मैं नहीं मालूम बोल दो कई वो तो लोग मालूम ही नहीं। ना मेरे को हम्म। कोई इतना डीप में पढ़ा है समझे आप। मेरे को जस्ट ये पढ़ाने वाला अरे भाई मटेरियल कैसा क्रिएट होना भाई एमएम जीरो उतना ही पता है मेरे को। अच्छा। फंक्शनली मैं स्ट्रांग नहीं था। अगर वो टाइम पे अगर ओके। मैं फंक्शनल कंसल्टेंट समझोगे 2008 में से अगर मैं एसएपी एमएम का जॉब माने तो था तो 2008 से लेके अभी तक कितना ईयर्स हो गया मेरे को। 18 19 20 21 22 14 साल। 14 साल का एक्सपीरियंस में मेरे को मेरी तनख्वाह 14 ईयर्स के एक्सपीरियंस के हिसाब से इंडिया में, इंडिया के कौन से भी कंपनी बोलो, आइदर विप्रो बोलो, आईबीएम बोलो, टीसीएस बोलो, कैपजेमिनी बोलो, डेलोइट बोलो, डेल बोलो, आराम से लोगों 2.5 से 3 लाख रुपए महीने को मिलते हैं। लेकिन मैं मंथली। 2012 में सीखा। हाँ मंथली 2012 में सीखा मैं एसएपी एमएम। सीखकर फिर मेरे को 1 साल का गैप मैंने मेहनत करा, प्रैक्टिस करा, तो बाद में मेरे को 1 साल के बाद मेरे को मिला। तो 2013 से अभी तक मेरा एक्सपीरियंस कितना हुआ, 14 15 16 17 18 19 20 10 21 इयर्स का 22 हुआ, 9 साल, मतलब 9 9 इयर्स साल का का हुआ। हुआ। 9 ईयर्स का हो रहा। तो मेरे को अभी कितना मिल रहा है, 1.5 लाख रुपए दे रहे हैं महीने में। तो जी। जितना आप परफेक्ट हुए उतना पैसा है वो बोलना जितना चाह रहा हूँ। अब एक्सपीरियंस हमारे ज़्यादा सेक्टर रहा में उतना जितना एक्सपीरियंस पैकेज है ज़्यादा बोलते हैं रहता ना है। जितना, हाँ जितना भी आप मल्टी फंक्शनल भी बनते हैं आप। अब आप 9 साल जी से जी। वो एमएम करके बोल रहे आप बोलते हैं अरे भाई अभी तुम परफेक्ट हो गए, आप बोलते नहीं भाई अब अपन क्या करना, डब्ल्यूएम करना बोलते डब्ल्यूएम सीखते हैं। फिर क्या होता है मल्टी फंक्शनल हो जाते हैं आप। एमएम भी आ गया, हम्म। डब्ल्यूएम भी आ गया, मार्केट में वो एकदम हीरो बन गया। अरे भाई कोई भी उठा लेता आपको, अरे बताओ जबरदस्त भाई, इसको एमएम भी आता है, अच्छा इसको अच्छा। डब्ल्यूएम भी आता है, चलो इसको उठा लो भाई, ऐसा रहता हूँ। अब मैं मेरे को जी। अभी विप्रो में बोल रहे मेरे को बोल रहे भाई डब्ल्यूएम भी कर लो, मैं नहीं करूँ क्योंकि मैं हर एक के अलग अलग वो रहता थिंकिंग आइडियोलॉजी रहता। मैं इसलिए नहीं करता हूँ हम्म। क्योंकि पहले एमएम में सर सर थोड़ी ये बोले तो मैं डब्ल्यूएम कर लेंगे। मैं ये लोगों को बोलूँ कि भैया मेरे को डब्ल्यूएम भी आता है, तो बेटे क्या करते शुरू शुरू में आपको, अरे ये बंदा जो है मल्टी फंक्शनल लेवल की क्या करते दो दो टिकट्स दे देते। पहले एमएम के टिकट्स मेरे को क्लाइंट्स देते आते हैं, मैं पागल रहा तो करते करते उनका इशू सॉल्व करते करते। अब डब्ल्यूएम का बोले तो दो ओके। तरफ से छापड़ फ्री है। तो अब जी मेरे को वो भी देखना पड़ता है, उसके इशू भी सॉल्व करना है, एमएम के भी सॉल्व करना है, डब्ल्यूएम के भी सॉल्व करना है। तो उससे अच्छा ये कि चुपचाप रहो आप। हाँ पहले ये बोलो भाई ठीक है, हम अपन बोलना भी नहीं। अपन क्या करते तेज में हम्म। आके बोल देते भाई मेरे को एमएम भी आता, डब्ल्यूएम भी आता, वो तो नहीं बोलता पकड़ा मिल गया भाई। 2 आदमी को हायर करने से अच्छा है कि एक आदमी से काम ले लो, तनख्वाह भी उतना ही दो। तो अपन क्या अच्छा। करना, अपन पैसे टके मुंह खोलना बोले तो अब जैसे कि आप आपको सैलरी हाइक होना है आपको राइट। मैनेजर आपका हाइक जी। नहीं कर रहा तो आप बोलना देखो भाई मेरे को डब्ल्यूएम भी आता, मैं एमएम भी संभाले तो डब्ल्यूएम भी संभाले तो अब बोल क्या करता। अब उन्हें बोलता ठीक है हम्म। भाई अब सैलरी बाहर वाले बंदे को डब्ल्यूएम वाले लेने से अच्छा है कि ये बंदे को ले लो राइट, क्योंकि इसको डब्ल्यूएम भी आता है, राइट। एमएम भी आता है, वेयरहाउस मैनेजमेंट भी आता है, मटेरियल मैनेजमेंट भी आता है। अब उन्हें क्या करता हम्म। ऑब्वियसली बाहर वाले को जो 12 लाख देने के बजाय आपको 6 लाख देता, तो आपकी तनख्वाह समझ लो 12 लाख के 6 लाख ऐड हो गया, 18 लाख पे चले गए आप। ऐसा रहता हूँ समझे बात को। अच्छा। तो जी मैं हाँ। थोड़े समझ पॉइंट दे गया। दे रहा हूँ मैं कभी भी क्या है लोग देश में आके क्या करते मालूम, भाई मैं तो एमएम भी आता डब्ल्यूएम भी बोले तो अब क्योंकि आप लोग शुरुआत रहते ना तो बोले क्या करते बोले आप लोगों को नहीं मालूम। शुरुआत रहते हैं आप लोग तो आप लोग देश में आके सही बोलते है तो बोले सर। क्या करते मालूम, अरे बकरा मिल गया भाई चलो इससे जो है दो काम ले लो तनख्वाह 30 दो बोलते। एक आध साल करके आप जी बोलते अगर। अरे जब आप बोलते अरे भाई गलती करा आप सब में पड़ा, मैं ये पागलों को बोलना ही नहीं था, एमएम भी बोलना था कहीं को तो तनख्वाह 30 दे रहे हो लोग बोलते जब रियलाइज करते। हम जैसे लोगों को अगर हम्म। कोई बोला, हमें एक्सपीरियंस हो गया, हम एक्सपीरियंस वाले 9 साल एमएम पे हूँ मैं, मेरे को आता है, मेरे को डब्ल्यूएम भी आता है, लेकिन मैं नहीं बोलता हूँ नहीं बोलता मैं अगर उन्हें कल के दिन इंक्रीज का सैलरी हाइक की बात आती है ना, जब मैं कंपलसरी ये बात को रखता हूँ मैं
भाई देखो जब भाई, रिवील मेरे करते साथ हैं। जो है, मेरे को जो है अभी तक आप लोग ये 16 लाख दे रहे हैं। अब मैं जो है, मेरे को बोला है, मैं पेपर जी। डाल दूंगा। तो उन्हें बोलता अरे ने बंदा जो ये पेपर भी डाल दो तुम बोल रहा हो, वहाँ तो कंपनी से निकल जा तुम बोल रहा हो। अब आप बोला मेरे को दूसरे कंपनी का ऑफर लेटर भी है भाई, मेरे को जो 25 लाख देते बोले वो लोग। उन्हें बोलता अरे भाई इन्हें बनता जो है इतने साल से काम कर रहा, तो उन्हें बोलता ठीक है भाई मत जाओ आप कंपनी छोड़ के, आपको डिप्लोम भी आता इतने भाई इतने साल से कहीं नहीं बोले। तो आप बोला हाँ भाई, इसलिए नहीं बोला कि बोले था आप लोग डबल काम लेते मेरे से, राइट? जब मुंह खोलना आप। राइट। तो हम लोग को मालूम क्योंकि हम ये चीजों से गुजरे हुए, अब आप लोग नहीं मालूम। अब राजेश भी क्या है, जी हाँ। एमबीए अभी अभी करे राजेश, अभी अभी राजेश की शादी हुई। अब आप है, आप बीकॉम करे हुए, तो आप लोग क्या है मालूम, एक आध साल आप लोग से खेल रहे थे कंपनी वाले, दो दो तीन तीन काम आते। अच्छा अगर आप अच्छा। बोले मल्टी फंक्शनल बोल के, अगर आप लोग हम्म। सीखे भी, अल्लाह तौफीक भी दिए, तो कभी अपने आप को सीखे तो भी स्टार्टिंग नहीं में बोल रहा किसी हूँ के जैसा ऊपर मैं, नहीं नहीं तो बोलना फिर पड़ता, डबल ऐसा है। काम ले लेते। डबल काम देते, हम्म। तनख्वाह तीस देते। हाँ ऐसा है। तनख्वाह होती है तो जब सैलरी हाइक के टाइम पे अपन बोल सकते हाँ, हैं ये बात। सैलरी हाइक के टाइम पे बोल सकते हैं भाई, मेरे को ये भी आता है इसका, मैं सर्टिफिकेशन भी करके रखा जर्मनी से बोले, तो जब आके ऐसा बिंदास सैलरी मिलती है आपको, मुंह मुंह बोले मिलती है आपका। मेरे जो कोलीग्स थे अलहमदुल्ला, वो भी थी मक्सी बोल के ईसीआर में रहता बंदा, ऐसे भी पीपी कंसल्टेंट है मेरे को। तो कंपनी में हम लोग एक साथ प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट करे बड़ा नागपुर मेट्रो रेल का। तो अलहमदुल्ला अच्छा। बंदा अभी इंफोसिस कंपनी में है। उन्हें 26 लाख का है पैकेज पे, होने 26 लाख। तो ऑलमोस्ट सोचिए इंडिया में इतना पैसे आ रहे हैं, तो लोग भाई सऊदी अरबिया जाके नहीं कमा रहे भाई। गल्फ में जाके, इवन अमेरिका में भी अगर आप 30% टैक्स कट होके आपके हाथ में उतने चाहते एक तरीके से देखे यार। इंडिया में क्या है, अच्छा जिसको अच्छा समझ अच्छा। में आ गया जमीन खोदे तो सोना है, उन्हें इंडिया छोड़ के जाता ही नहीं। सोने की चिड़िया हम्म। इंडिया में है। जिसको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना, तो उन्हें छोड़ के जाता है, उन्हें बोलता है इंडिया अच्छा है भाई, कहाँ है अमेरिका जाना है, कहाँ लंदन जाना हूँ, यही अच्छा है मुझे बोलते हैं। और ऐसे कंपनी में, जी। बड़े कंपनी में काम करने से ये है कि ओला खुद बेचते हैं। जैसा विप्रो है, विप्रो में आपको अपॉर्चुनिटी मिली, तो विप्रो में जो है दे हैव ब्रांचेस एवरीवेयर इन द वर्ल्ड, राइट? वो लोग ऐसा डोमिनेट करेंगे। विप्रो अमेरिका में भी है, विप्रो ऑस्ट्रेलिया में है, विप्रो लंदन में है, राइट? अब मेरे कोलिग से राइट। विप्रो विप्रो वाले भेजे, वो लोग हैदराबाद के थे, जहाँ पे जाके जो ऑन साइट ऑफ साइट होती है टर्मिनोलॉजी आपको मालूम होना। ऑन साइट काम करना बोले तो क्लाइंट लोकेशन पे काम करना, क्लाइंट हम्म। लोकेशन को तो यूके जाना। तो विप्रो वाले आपको वीजा देते, आपको इतना सरपड़ी करने की जरूरत ही नहीं है। तो हम बंदे अच्छा। को जा रहे हुए ऑफ साइड वो करते, ऑफ साइड बोले तो इंडिया में रह के काम कर रहे हैं, लंदन का काम, ऐसा ऑफ साइड ऑन अच्छा अच्छा साइड अच्छा। मालूम है। तो आपको ओके। अपॉर्चुनिटी मिलता। विप्रो वाले देते आपको, आईबीएम वाले देते, एक बार सेलेक्ट हो गए। अगर आप यूके का क्लाइंट है, अगर यूएस का क्लाइंट है, तो आप क्या करते, ठीक है भाई एक बंदा, क्योंकि वहाँ पे क्या रहता, कंपनी वाले क्या बोलते हैं मालूम, वो लोग बोलते हैं कि भाई हमको ऑन साइड का भी बंदा चाहिए। अब सिर्फ हर चीज पूरा इंडिया से करे नहीं होता, हमको समझ में नहीं आता, वो मीटिंग मीटिंग वो फोन गिना, वो हमको फेस टू फेस देखना है हमको बंदे को, राइट? तो वैसे मौके में क्या होता जी। बोले तो ऑन साइड का अपॉर्चुनिटी मिलता। आपको विप्रो ओके। वाले क्या कहते हैं, पापा अमेरिका का वीजा लगा के भेज देते, J1 J2 वीजा बोलते रहता। J2 बोले तो 2 साल का वीजा आपको दे जी देंगे वहाँ हाँ। पे, वो जाके H1 में कन्वर्ट हुआ था। तो बहुत पहले, तो वही बोलूँ मैं, आईटी ऐसा समुद्र है, आईटी में से कौन सा भी एक चीज पकड़ लेना पड़ता, जैसे मटेरियल परफेक्ट हो मैनेजमेंट जाना और पकड़ उसमें। के रखते, परफेक्ट हो जाएगा उसमें। बाद में रास्ते खुलते रहे तो ऑटोमेटिकली पैसा तो होते भाई। अभी तो मुंह मांगे दे रहे, हम्म। अभी तो मुंह अच्छा मांगे अच्छा। दे रहे। जब तो कोरोना आ गया ना, कोरोना के बाद से भी जितना बोले थे दे रहा। मैं सपोज फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर विप्रो छोड़ा तो मैं जो है, मेरे को दूसरे कंपनी वाले जो है 100% हाइक देते थे। उतना दे रहे जी पहले, हाँ। क्या 25% टू 35% हाइक मिलता दूसरी 15 20। कंपनी में जंपिंग हाँ करे तो। राइट। लेकिन यहाँ क्या है, 100% भी दे दे रहे। अगर मेरा यहाँ पर 16 लाख हो रहा तो मेरे को 32 लाख का भी पैकेज देने रेडी है। अभी आईटी को अगर डिमांड हम्म। हो गया। Hmm. Okay, ओके। so here, so this is what I mean to say. This we have seen the profit, right? So earlier in our earlier example, we have seen the loss. Now see, if you see the PO, let me go to ME23N. Okay, I'm seeing the PO. Now I can see the PO history, purchase order history. See, this is what the PO, right? 244. Purchase order history is generated. Why? Because I passed the GR, goods receipt, right? This is my GR. If you double click, it will directly redirect you to display a GR, that is MyGo A04. See here. Double click here, material document number. It will redirect you to display A04, right? So this is what I found. I hope you understood this all, everyone. So, okay,
let me show you the future price also. Option, it is for in-house production. If standard price is going to increase or decrease from a particular future date, then specify future price. So valid from माने अगर कोई future price अगर आपको देना है, standard price let's say increase होना है future में, तो आप ये ले सकते हैं आप. और कब से वो डेट, कौन से डेट से इंक्रीज होना, वो अभी आप दे सकते हैं. ओके. And now, note, accounting one and accounting two data is maintained at the valuation area level, that is nothing but MBEW. Accounting two. So accounting two जो है क्या है, बोले तो अपना एरिया नहीं होता हो. Accounting ये फीको वाले जो है ज़्यादा इन्वॉल्व रहते हैं और वो लोग जो है accounting one and two का वो लोग देख लेते पूरा. Okay. So we need to understand what is development server, what is quality server, what is production server. Whatever implementation we do in development server. Okay, Rajesh. And whatever testing we do in quality server, and this production server is nothing but go Yes. live, where the end users create the material, where the end users, if you talk about the purchasing department, which is our area, which is again called as procurement department. So procurement department people or purchasing department people, they create the material, they create the PO, they create the GR. So in production server, they create, not in quality or not in development. Development is purely functional consultant area. Whatever we do the development, we they will give in company, they will give three servers. Okay, development, quality, and production server. So production server is not our area. This is end user area. Okay. So some important material transition codes I have mentioned here. So create or extend the existing material, that is MM01. Okay, if you want to update MRP, then log in into SAP and save the changes in MRP. Enter existing. So here, I have given some T codes MM01, how to extend the material, okay, and how to extend the material type. That also I have given. These are some important, transition codes. And here, create or extend existing material to another plant, okay, MM01. So this is also I've given. Create or extend existing material to another storage location, same MM01. Extend existing material number to multiple stores at a time. The transaction code is MMSC. Okay. And change material price MR21. In our earlier class, I have shown you. You can see the recording MR21. How to change the price of the material, right? And change the material type MMAM. Material type T code. Let's say material type you have taken ROS, but now you need to take the material type as per FERT. So via MMAM, you can change the material type also, okay? And mass maintenance, okay? MASS mass is there, the transition code. This is related to all material master transition code, okay? Delete or archive flag material, MM71 or SARA, but you need to be very much careful. कोई भी चीज आप जो है SAP का डाटा उड़ा रहे तो बहुत केयरफुल रहना पड़ता है, क्योंकि एंड यूजर जो डाटा मेंटेन करे SAP में पूरा डाटा उड़ जाता है. तो इसमें बहुत सारे लोगों का ऑथराइजेशन लेना, मैनेजर का ऑथराइजेशन लेना, क्यों डिलीट करना चाह रहे, क्या है, क्योंकि परमानेंटली डिलीट होगा. टेम्पररी डिलीट के लिए क्या है राजेश, MM06, राइट. टेम्पररी डिलीट द मटेरियल, बट अगेन यू कैन रिट्रीव इट. आप फिर से डाटा लेके आ सकते हैं. कहीं को तो MM06. परमानेंट है MM06, क्योंकि आप MM06 से क्या है, मटेरियल डेट टेम्पररी डिलीट हो गया, उसके ऊपर पीओ नहीं बना सकते. कहीं को तो डिलीट हो गया, लेकिन उसको पीछे अनडिलीट भी कर सकते हैं सेम MM06 में जाकर. ओके. एंड MM11 है शेड्यूल मटेरियल क्रिएशन. फिर उसके बाद में एक्टिवेट शेड्यूल क्रिएटेड मटेरियल MM13. ये पूरा करके देखो आप. डिस्प्ले मटेरियल चेंजेस में क्या हो रहा है, MM04 है उसका ट्रांजेक्शन कोड. ओके. एक्सटेंड मटेरियल भी टी कोड MM50 है. टू सी द स्टॉक ओवरव्यू मल्टीपल मटेरियल MB52 है. इंटरव्यू क्वेश्चन थोड़े बहुत मैं दिया, ये कैसा रहता है इंटरव्यू का लिए. ये जब आप सर्टिफिकेशन करते हैं SAP MM का, सर्टिफिकेशन अलग चीज है अरीब, राजेश, और सर्टिफिकेट अलग चीज. जैसा आप फॉर एग्जांपल मेरे पास सीख रहे हैं, तो मैं आपको सर्टिफिकेट बना के दे दूँ, भाई स्टडीड SAP MM फ्रॉम सैयदतुल हफीज. तो एक यहाँ हो सकता है इंस्टीट्यूट, जैसा अमेरिका में बहुत सारे इंस्टीट्यूट है, वो सर्टिफिकेट वो काम ही नहीं आता यार. और जी इंटरव्यूअर कोई पूछता भी नहीं, भाई वेयर वी लर्न SAP, वो इंटरव्यू पूछता ही नहीं इंटरव्यूअर. उन्हें आपका नॉलेज, सब्जेक्ट नॉलेज देखता है, आपको कितना नॉलेज है मटेरियल मास्टर के बारे में बोले तो उन्हें देखता है कि आपको कितना नॉलेज है मटेरियल मास्टर टॉपिक में. अभी हम जो टॉपिक कवर करिए मटेरियल मास्टर में, राइट. तो उन्हें इंटरव्यू जी ये देखता है कि आपको कितना नॉलेज है मटेरियल मास्टर में. तो आपको सर्टिफिकेशन करना रहता जो कि जर्मनी से आता. जर्मनी का SAP है, राइट. SAP जर्मनी से इंट्रोड्यूस करे जी हाँ, 1972 यस्टरडे में. क्लास में तो बोले आप. सर्टिफिकेशन, हाँ,
तो तो सर्टिफिकेशन जर्मनी से थप्पा लग के आना स्टैम्प, उसको बोलते हैं सर्टिफिकेशन। तो सर्टिफिकेशन कर अच्छा। लिया तो प्लस पॉइंट रहता है, लेकिन इट डजंट मीन दैट अरे भाई सर्टिफिकेशन करे कोई जॉब मिलता है एसएपी का, नहीं तो नहीं मिलता, बोल के ऐसा भी नहीं है। नॉलेज रखे क्योंकि तो बहुत मिल सारे जाता है। नॉलेज हो तो आपको मिल जाता। सर्टिफिकेशन मैं तो हर एक को ये राय मशवरा देता हूँ, एक बार कंपनी में घुस गया ना तो वो लोग आपको सर्टिफिकेशन कराते फ्री ऑफ कॉस्ट में, और ये जी। करना बेवकूफ़ी है वो। अगर अच्छा। पैसे है तो वो कर लेना, ठीक है, ओके, अच्छा है। लेकिन आप जैसा विप्रो में आप काम करें 1 साल 2 साल, या कौन से भी आईबीएम कंपनी बोलो, टीसीएस बोलो, बोले क्या करते हैं मालूम, जो नई न्यू एम्प्लॉयज है 2 3 साल काम करे तो आप खुद बोलना आई वांट टू डू सर्टिफिकेशन बोलते हैं इंडिया में। उन्हें बोलता ठीक है करो बोलता। तो क्या करते मालूम आपको, हम्म। पहले बाहर कंपनी का अलग अलग रहता है, जैसे टीसीएस में कैसा है बोले तो, इन्फोसिस का बात करो, इन्फोसिस में क्या है, पहले आप आपसे जेब आपकी जेब से पैसे लगाना। अब सर्टिफिकेशन जो है कैसा है मालूम, 10 दिन में 1 महीना नहीं लगता सर्टिफिकेट। 80 क्वेश्चंस क्या रहता, जैसा लास्ट ऑनलाइन एग्जाम रहता, लास्ट 80 बिट, चार चार में से एक करेक्ट, जैसा एमसेट का एग्जाम लिखते हैं अपन नीट का, 4 में से एक करेक्ट रहता है, यहाँ पर भी ऐसी है। तो लास्ट जो है 80 क्वेश्चन आप दबा के जब आप चले गए, तो जब तक जब पास और फेल आ रहा था आपको, जब भी सर्टिफिकेट आप डाउनलोड कर लो। समझे बात को? जी सर। हेलो। हाँ हाँ हाँ, सर तो जी। लास्ट समझे। 80 क्वेश्चन जब आप सीख करके जब आप बाहर निकल जाते, कंग्रेचुलेशन यू पास द सर्टिफिकेशन मिल गया था, काइंडली डाउनलोड द सर्टिफिकेट बोलता। वो सर थोड़ी है ही नहीं, जर्मनी से आपको डायरेक्ट के पूरा छपा हर चीज आया थी सर्टिफिकेशन। मैं सर्टिफिकेशन करा विप्रो से, आपको बता दूं मैं, आप लोगों को इसमें गूगल सॉरी व्हाट्सएप में मैं आपको शेयर करूंगा आप लोगों को। वो कौन से भी दुनिया में सर्टिफिकेशन में एक लिंक वो लोग देते, वो लिंक आप दे दिए तो वो लिंक से ओपन करके ये फेक है या जेन्युइन है कैसा मालूम होना, वो भी आप लोग को आइडिया देता हूँ मैं। तो खोले तो आपको ना कौन से भी दुनिया में रहो खोल के देख ले सकते हैं, अरे जो है कौन से डेट में सर्टिफिकेशन करे, कौन से टाइम में निकाले, कितने अटेम्प्ट्स में निकाले, वो सब डाटा आता पूरा वहाँ। ऐसा रहता तो सर्टिफिकेशन तो हर कंपनी का अलग अलग रहता। अब इन्फोसिस का कैसा रहता हो, तो पहले आप आपके जेब से पैसे डालो, पास हो गए तो उनको बोलो मैं पास हो गया, तो जितने पैसे आप डाले वो पैसे वो लोग देते, रिइंबर्समेंट वाला। विप्रो की कहानी अलग है, जी। विप्रो वाला क्या होता, अगर मैं बोला भाई मेरे को एमएम का सर्टिफिकेशन करना है, उन्हें बोलता ठीक है करो बोल के, उन्हें खुद पैसा लगाता शुरुआत में, देखो जेब से एक पैसा नहीं, लेकिन उन्हें एक वार्निंग देता। वार्निंग क्या, भाई 2 आइटम्स मैं दे रहा हूँ भाई, आप 2 आइटम में भी फेल हो गए तो तीसरा मैं नहीं दे सकता हूँ मैं, मेरे उसमें गुंजाइश नहीं होगी। तो मैं अल्लाह के फजल करम से मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में पास हो गया। ये जनवरी जी। कब, हाँ जनवरी 2022 में मैं सर्टिफिकेशन विप्रो से करा मैं, माशाल्लाह। अच्छा। घर में बैठ के जो है ऑनलाइन एग्जाम लिखा, जब तक पास हो गया फर्स्ट हम्म। अटेम्प्ट में। तो और एक अटेम्प्ट रहता ना, तो अच्छा। उसमें क्या करना, होशियारी 2 अटेम्प्ट का आपको देते, 2 बार खुलता वो, आप ऐसे भी। तो होशियारी क्या करते बहुत सारे लोग, हाँ 2 अटेम्प्ट दे दिए, तो एक जी। अटेम्प्ट में हर लोग क्या करना, एमएम कर लेना, अगर आपको नॉलेज है डब्ल्यूएम का तो क्या करना, डब्ल्यूएम का सर्टिफिकेशन भी कर लेना, 2 अटेम्प्ट है ना। तो लकीली क्या अच्छा। होता है मालूम, 2 सर्टिफिकेशन मिल जाते हैं आपको, हाँ ऐसा रहता। अगर आप जी जी। सर्टिफिकेशन फर्स्ट अटेम्प्ट में फेल हो जा रहे हो तो सेकंड अटेम्प्ट एक रहता, सेकंड, तो क्या सेकंड अटेम्प्ट में ट्राई कर लेना। लेकिन लकीली अगर हाँ, फर्स्ट अटेम्प्ट में आप पास हो रहे तो दूसरा सर्टिफिकेशन कर तो ले सकते हैं, सेकेंड क्योंकि अटेम्प्ट बच विप्रो गया वाला तो उसमें आपको डब्ल्यूएम का दे देना। डब्ल्यूएम कर लो या पीपी कर लो, प्रोडक्शन प्लानिंग, या फिर एचआर कर लो, ह्यूमन रिसोर्स, या कुछ भी बड़े, अगर आप एसडी है सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन, अगर आपको आ रहा आप करना चाह रहे तो वो कर सकते हैं, ऐसा है। ओके देन, अच्छा। चलो फिर विल मीट टुमारो। तो ओके आपको मैं सर वो ओके। आपके जीमेल में मैं आपको दिया था कल का रिकॉर्डिंग, देखिए चेक करें अभी। हाँ सर देख लिया मैं। रिकॉर्डिंग, हाँ। तो ठीक है, आज का भी रिकॉर्डिंग मैं शेयर कर दूंगा 1 घंटे में, ये रिकॉर्डिंग जनरेट होने में 1 घंटा 2 घंटे लगते हैं मेरे को। तो ठीक है, चलो जी आपको सर धीरे ओके धीरे सर। आता है समझ ठीक। में, एकदम पहली क्लास में नहीं आता समझ में। राजेश तो हाँ हाँ सर। ऑलरेडी क्लासेस अटेंड करे, उनकी राजेश की शादी हुई बीच में तो थोड़ा गैप हो गया, क्या राजेश, यस सर समझो यस बीच से सर। आगे समझो। हाँ हाँ, तो हाँ। आपको कैसा हम्म। दिखा भाई, आपको डिफिकल्ट दिख रहा है या इजी दिख रहा है राजेश, बोलो। नहीं स्टार्टिंग में आप भी डर रहे थे राइट? नहीं। यस। हाँ, शुरुआत में डर हर एक को रहता भाई, जब मैं सीखा स्टार्टिंग 2011 में, तो मेरे को आप यकीन मानो, शुरू के 20 दिन मेरे सर के ऊपर से गए, सर क्या बोला कुछ समझ में नहीं आ यस। रहा था। स्टार्टिंग टाइम में सर और वही हो दो रहा साल था, बाद थोड़ा में, कंफ्यूजन रहता था। हाँ हाँ कंफ्यूज होते होते भाई, मैं 20 दिन के बाद 21वां दिन में मेरे सर दिमाग में बैठा, अरे अच्छा ये है क्या बोलते। तो ऐसा हिम्मत हारना नहीं है, इससे ज्यादा डीप में अगर अपन गए सोचना अपन क्यों हो रहा है क्या हो रहा,
तो आपको समझ में आता जी। देर मैं बोलते रहे तो वो रिकॉर्डिंग आप तेरे रहे प्रैक्टिस भी नहीं करे तो कुछ भी समझ में नहीं आता. ओके देन चलो विल कंटिन्यू टुमारो. ओके सर, ऑलराइट. चलो अल्लाह हाफिज। ओके Okay, sir. Good night, sir. ओके ओके गुड गुड नाइट. नाइट।